हाँ इधर ही सर आ जाता है। हाँ ये उधर रखता सर के लैपटॉप के पीछे। Fine. Shall we start or shall we wait for the dignitaries to drop out? Fine, let's start. We have gone through three important circuitries: the circuitry of the thalamus, the circuitry associated with thalamus operations, which are basically part of the head cell. And we have also gone through the circuitry associated with the root of basal ganglia. So all of these particular units combined together, thalamus, hypothalamus, basal ganglia, and its various roots result in the generation of something which we know as memory. And we all know that the memories are of two major types depending on the human experiences, that is the positive memories and negative memories. As a part of human evolution, humans have basically evolved to retain negative memories rather than positive memories. Retention of negative memories is very important from the evolutionary point of view, because whenever you come across something which was not good to you, to which you felt bad about which you felt threatened, or something which actually hampered your existence or your fighting ability to exist. So that is something which is to be tackled on a long-term basis. And whenever you tackle something which is bad for you on a long-term basis, you will definitely evolve. So as part of the evolutionary landmark, the humans have evolved to retain negative memories. 90% of the memories, sometimes more than 90% of memories in certain personalities are supposed to be negative memories rather than the positive memories. Because they make you evolve on a daily basis, making you better and better, not to encounter this, to improve it, to make it better from the existential point of view. So if we just divide the type of memories on the physiological grounds, so we will have two particular types of memories. One is the explicit one and another one is the implicit one. Explicit is that the memory on the basis of which you are giving your social reactions or social interactions, etc., etc. For example, your likes, your dislikes, the way you carry out, the way you talk, the way you behave, the sort of emotions you develop, that is implicit memory. And the explicit memory. And the implicit one is a more philosophical type. What exactly you think about yourself, your existence, your connection with the universe, etc., etc., etc. What should be the next evolutionary hallmark in your existence? What exactly you aim for? What exactly is supposed to be good for you in a couple of years or in 5 years? Or what kind of personalities you will be seeking in a couple of years or in 5 years? The sort of people you're going to settle with. So the personality traits which are within the impression which you are taking within about your existence or your environment, about your interactions, that is basically the implicit memory. Of course, all the positive and the negative ones. The explicit unit, that is dependent on two things, that is the facts and events. Whatever fact you have encountered, provided you have considered that as a fact, and that we have already studied when we were studying the frontal lobe, that if your frontal
actually believe that particular thing, that whatever is being said, whatever is being told, that is exactly the fact. The fact is something which develops within a human being on the basis of its capacity to interpret. That means that whatever fact you have come across, have you been able to find a very logical, legible trail of that across history? Is it exactly the same like other people, or the people with an evolved capacities are able to have a similar impression, or is your impression coming very different from it? So if you are developing an impression which is based on something which has been told to you, and you do not have any desire to actually have a trail of that particular fact through any particular resources to be, nor do you feel any particular need to countercheck that particular thing, that is not a fact, that is an impression. And impressions are developed by lower mammals. The humans are not supposed to develop impressions, they are supposed to develop the facts. Sorry? And then we have got events. That means that whatever you have encountered in your life, on the base of that particular thing, you actually develop something that becomes the part of your personality. For example, you have come across a particular person, a person who you feel good about, a person who makes you feel good about yourself, a person who supports you, etc., etc., etc. So that's an event which has taken place in your daily life. So whenever you have encountered a particular event which either has supported you for your existence or has negated you for your existence, that is something which is considered event by a particular rate. आपकी जो explicit memory होती है, जो आपके basic responses होते हैं, that whether you accept something, whether you reject something, you feel pleasure about something, you feel hatred about something, you feel lost about something, you feel neutral about something, you don't want something, you want something. That is all your basic human responses जो कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पता चल रहे होते हैं, that is आपकी जो personality है उसके traits जो है वो ये. तो ये जो आपकी memory होती है, जो explicit होती है, that is dependent upon two particular things, that is facts and you. Provided that you have evolved your frontal cortex to a particular level where you are able to actually verify something which you are considering as a fact, and making you develop a capacity where you can verify an event as an event, and it is just not your perception. Perceptions and impressions are not the function of the human frontal cortex, that happens within the lower cortex. Then we got the implicit memory. So if you just have a look over here, this is associated with something which is more highly developed. That means that whatever insights you are developing, they are supposed to be far more philosophical, have to have far more intellectual depth or emotional depth within it, and they are usually not expressed to the general public. They are usually kept within a very close secret circle, and unless and until you have got a particular level of trust with someone, or unless and until there is a particular event or an opportunity or an eventuality to vent that particular aspect of yours, only then someone around you is going to know that, oh, this person was supposed to be having traits like this also. So, this implicit sort of memory is dependent on priming. The priming is that you become acquainted with something. For example, you actually start a particular year at the School of Medicine, and once you have been acquainted with a particular new aspect of the knowledge, that particular knowledge is slowly becoming part of your personality, and you are developing concepts about particular field of medicine, that and this is how this particular thing works, and then for the long term you are developing and evolving your responses to that particular thing. So priming is that you have been primed to a particular sort of knowledge which has been injected into you through various forums, और वो आप उसको various senses के जरिए जो है अंदर इनको उसका लेते हैं, तो you have been primed about something over this. Then we have got procedural memory, that means the memory which is associated with your skills and habits. So the skill आप develop करते हैं in the long run, which is basically the particular facilitation within the pathway from
पे जब आपके people में stimulate करते हैं, you develop the skilled activity. And the people who are supposed to have very high levels of skilled activity are usually the most intellectual ones also, because they are continually evolving to do something new in their particular skill. For example, if you paint something, or if you design something, or if you do the embroideries, for example, there was a time when our ladies used to do that. They do not do anymore. I don't know what's the reason behind that. Maybe they think that they are educated to do some creative stuff, whatever it is. So, if you're doing very creative sort of a job, you're putting your daily input into it, and it is basically evolving. And the more you are actually putting that particular hand and brain continually working at the same time again and again and again, so your intellectual capacities are enhancing, because ultimately your intellectual area is getting more and more and more fine and facilitated and habituated also at the same time. So you are evolving something on daily basis. So the skill activity are evolving skill activity. For example, you paint in different type of mediums, you write in different type of mediums, you design in different type of mediums, etc. etc. उसमें because कि आपकी तमाम सेंसेस, तमाम लिम्बिक इंडस्ट्रीज फिर कंबाइन टुगेदर आपके जितने भी विजुअल गैंग्लिया के लूप्स हैं और सेरिब्रल लूप्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये अल्टीमेटली आपके इंटेलेक्चुअल एरियाज के साथ कनेक्टेड हैं. तो these are the ones which make the people more philosophical, more artistic, more creative, and more intellectually evolved. Other than the associative learning and classical software conditioning, that is once again emotional, consisting of emotional responses, and that is consistent of the. यदि आप जिस चीज़ को जो है वो इनकाउंटर कर रहे हैं, उसको जो है वो आपने लिम्बिक सिस्टम के साथ जो है वो एसोशिएट कैसे किया है. और लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो है वो दो चीज़ें एसोशिएट हो रही होती हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज एंड लिम्बिक रिस्पॉन्सेज. तो आपने जिस भी चीज़ को इनकाउंटर किया इन योर लाइफ, वेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइमिंग और वेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोसीजरल स्किल्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका जो हाईली इवॉल्व ह्यूमन एलिमेंट था या ह्यूमन कैपेसिटी थी, वो बेसिकली है वो क्या. और वेदर इट वॉज बेसिकली एसोसिएटेड विद योर physical body, or whether this was associated with your internal consciousness, which you basically know as soul. So whether the thing which you have been encountering in your life has got a very physical dimension or non-physical dimension, that is basically the third element which आपको associate करता है. और human depth जो है उसके अंदर जो provision होती है, और दो तरह के इसमें responses होते हैं. इमोशनल, यानी कि जो चीज़ आपने की, whether you are feeling good about it. The creative people feel good when you are creating something. While they are in the process of creating something, they are in a very agitated sort of a state, because if something is being created and the perfection which we need over there, that is not making them set properly somewhere. They have got a period of very high level of irritability or non-mind, whether with emotional volatility. And once they have created something, they feel good about it. And once they have created, then they are going to develop an interpretation that whether this was up to the mark, whether this was up to the perfection, or whether this required something additional, इसको और इवॉल्व करना. तो ये जो आप इमोशनल डेप्थ के साथ डेवलप करते हैं, वो उसका एसोसिएटिव एलिमेंट है. और अगर जो है वो आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसने जो है वो बहुत ही नेगेटिव जो है वो इम्प्रेशन जो है उसको डेवलप की है, तो आपकी बॉडी में उसके नियर्स पे और इम्प्रेशन कैसे देने हैं या रिस्पॉन्सेज कैसे देने हैं, उसमें आपको मस्कुलोस्केलेटल जो है वो हमको लेना है. फॉर एग्जांपल, यू डू नो दैट कि इफ समवन approaches you with malparenting, then how exactly you have to defend yourself in that particular moment. Or if someone has been bitching about you somewhere and you actually know about it, so what exactly is the sort of word or the sort of structure of sentences you have to choose to respond to that particular situation in that particular moment. The musculoskeletal responses देने के लिए आप जो develop करते हैं, that is once again dependent on the information which you are getting from the associated areas, whether they are the limbic areas, whether they are the motor areas. And then we have got the non-associative learning, that means कि reflexive आपकी जो activity होती है, उसकी जो memory आप develop करते हैं. For example, कि कुछ चीज़ों के लिए आप unintentionally या non-intentionally immediate जो है वो responses जो है वो provide करते हैं. For example, as I have said that, let's suppose that you do not like a particular kind
food is offered to you and unintentionally you just reject that particular food, all of your body goes into a particular sort of a posture or you develop to choose a particular sort of word. ये जो आप रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी डेवलप करते हैं, चाहे वो मोटर लेवल के ऊपर हो, चाहे वो आपके लिम्बिक लेवल के ऊपर हो, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. कंबाइन टुगेदर ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं आपके प्लानिंग है, अगर आपकी लर्निंग है, एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव, या आपकी वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में आती हैं जो कि इंटरनली फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे होते हैं, जो यूजुअली डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ अनलेस एंड अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंचुअलिटी ड्रॉप्स और अनलेस एंड अंटिल you feel safe to express that particular sort of aspect of your personality within a public you trust or within a public you feel that is appropriate for this particular thing. So these are the basic type of memories, that is implicit and explicit ones. Now if you just have a look at these are the basically physiological processes which work at the synapses of these particular circuits. और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू डेवलप अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मेमोरी. सो जितने भी सर्किट्स आपके मेमोरी के होते हैं दे बेसिकली कैल्शियम डिपेंडेंट. तो या तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया जाएगा प्री सिनेप्टिकली, पोस्ट सिनेप्टिकली थ्रू ऑल द सेकंड मैसेंजर असेंबलीज जो कि आप ऑलरेडी पे पढ़ चुके हैं. अभी वो जो सवाल आया था उसके अंदर आप उसमें असेसमेंट के अंदर ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री सिनेप्टिक एक्टिविटी पर रिलीज होता है, उसके साथ जो आपकी उसकी फंक्शनिंग के साथ जो आपका जो है मॉलिक्यूलर असेंबली एसोसिएटेड होती है उसके ऊपर जो है बात करें तो दैट वाज बेसिकली जो प्री सिनेप्टिक एक्टिविटी पर रिलीज होता है ऑटोनॉमिक में, चाहे वो सिम्पथेटिक हो या पैरासिम्पथेटिक हो, दैट इज एसिटाइलकोलिन. और एसिटाइलकोलिन के साथ जो असेंबली इस्तेमाल होती है दैट इज IP3 कैल्शियम. तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट IP3. यहाँ जितनी भी सिनेप्स के अंदर मेजॉरिटी आपके सिनेप्सेस काम करते हैं स्पेसिफिकली लिम्बिक के अंदर, और लिम्बिक के आगे जो है ऑटोनॉमिक का जो है प्रिकर्सर जो है बन जाता है, बिकॉज के लिम्बिक एरिया से ही ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है आपका उठा होता है, चाहे वो आपके हाइपोथैलेमिक एरियाज हों, चाहे वो आपके कॉर्टिकल एरियाज हों, बेसल गैंग्लिया एरियाज हों, थैलेमिक एरियाज हों, इन्हीं से आपका जो है ऑटोनॉमिक उठता. तो ये सारे जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्बिक सिस्टम ही प्रिकर्सर होता है ऑटोनॉमिक का. दैट इज वाई आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑटोनॉमिक को बड़े शदीद इमोशनल रिस्पॉन्सेज के साथ भी टैलेंट के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी जो डेवलपमेंट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कैल्शियम, ईदर an increase in the presynaptic calcium or else in the postsynaptic response to the calcium. और इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट बेसिक जो है वो प्रोसेस जो है वो काम करते हैं. ये सारे प्रोसेस आई होप सो दैट आप लोग जो है वो सिनेप्सिस के साथ जो है वो पढ़ गए. पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन होता है. पोस्ट टेक्निक का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सिनेप्स को फैसिलिटेट कर देते हैं और वो फैसिलिटेशन एक बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती है, तो पोस्ट सिनेप्टिकली जो कैल्शियम का लेवल है विद एवरी पर्टिकुलर रिलीज दैट कीप्स ऑन एनहांसिंग एंड देन इट एक्चुअली कन्वर्ट्स द पोस्ट सिनेप्टिक आफ्टर फाइबर होता है इनटू अ स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस फायरिंग. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इफ द पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर हैज बीन फायरिंग फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इट सेंड्स वेरी रैपिड सिग्नल टू द हिप्पोकैम्पल सर्किट, और फिर वहाँ पर आपका एक मेमोरी है या जो एक पर्टिकुलर इमेज है वो एच्ड होना शुरू हो जाता है. These particular sort of potentiations are usually working in those particular people who do not or are not fond of using intellectual capacities of theirs, and all of their impressions or memory is dependent on something which we know as rectification of time. तो जिस वक्त आप प्लानिंग कर रहे होते हैं बेसिकली आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो टेक्नाइजेशन का जो है वो प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है. एंड वी ऑल नो कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन को जो है वो टेक्निक के अंदर डालेंगे बार बार उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर स्टिमुलेट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग उसमें पोस्ट सिनेप्टिक जो प्लास्टिसिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी. जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर गोइंग टू बिकम लोअर एंड लोअर एंड लोअर. दैट इज व्हाई द क्लानिक नॉलेज हैज गॉट वेरी स्मॉल ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव ट्राइड टू एच एन इमेज based on a process which was supposed to last for a small period of time, and if you keep on stimulating that circuit again and again, instead of supporting the knowledge which you are trying to retain, it is being wiped out because के जो post receptor आपका synaptic receptor पड़ा होता है उसके response
एंड वो जो सिनेप्सिस वाला चैप्टर था उसके अंदर भी हैबिचुएशन जो है, हैबिचुएशन बेसिकली कि जब आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सर्किट से बार बार गुजारते हैं और आपका जो हायर सेंटर है वो इस बात को कंसिडर करता है कि दिस इज नॉट ए वर्थ वाइल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिस्पॉन्ड टू. For example, you are sitting in the lecture hall and you are listening to someone you are not interested to listen to, or the someone who is standing over here is not well enough to make you listen to something or to force you listen to something one way or another way. So whatever the information is coming through that particular circuit, that is being totally wasted. You are just sitting and sitting and sitting. The person who is standing over here is standing and standing and standing. And it seems that we are doing something, but actually we know that everything which is being done in this particular period of time, that is being negated at the last time, considering that this is not worthwhile. तो जिस वक्त आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक सर्किट से गुजारते हैं और फिर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली आप उसका जो इंप्रेशन डेवलप करते हैं और इंप्रेशन के अंदर जो आप अल्टीमेटली इमोशनल डेप्थ डालेंगे और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डालेंगे एंड यू कंसिडर दैट दिस इज नॉट वर्थवाइल, ultimately that is being considered as rubbish sort of an information and your brain become habituated to that particular information. अगर ये आ भी रही है तो you stop responding to that particular information. That is how majority of the public sits in the lecture case. They have become habituated to something which is not. Sensitization is a totally opposite of the habituation. That you have been sensitized to process some information very rapidly. So you know that there is a particular sort of a professor who is going to put hurdles in the process of your general habits and processes of learning, and is going to make you jump over certain particular things. So you actually start to put an effort over there that we need to develop or we need to process this information, because this information is sooner or later going to drop inside the exam. So what exactly you do, that all of your capacities, whether they are the limbic one or the sensory ones or high intellectual one at the level of the Nikki's area, they are trying to focus you at that particular flow of knowledge which is being. So at that particular thing, when a particular important information is flowing through the CNS, उसके साथ साथ जितनी भी information आपको flow कर रही होती है, for example, that at the same time if you are sitting with one of your friends and that particular friend is continually nudging you to talk to her or him, or is continually nudging you to play something with her on the phone, etc., etc. So you keep on shunning that particular person. No, this is not the time. This is not the time. There is something very important going on over here. So this is particularly something you are basically sensitizing. Okay, whenever this information is going to flow, I have to develop a particular sort of a response. And once again, this is both dependent on your implicit impression also and your explicit impression also, that habituation has been taking place in that particular circuitry of the memory जो कि हम already जो है वो पीछे go through कर चुके हैं. दो important और जो processes होते हैं, आपका long term potentiation होता है और long term जो है वो dependent depression होता है. Potentiation जो है वो memory enhancement के लिए काम करता है और depression जो है वो आप किसी भी information को अगर consider करेंगे null and void तो उसको जो है वो negate करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है. Long term जो आपका potentiation होता है, NMD एक्सेप्टर डिपेंडेंट भी होता है, NMD एक्सेप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट भी होता है, और ये यूजली जो है वो आपके स्किल के सर्किट्स के साथ जो है वो काम करता है. दैट मीन्स कि जो स्किल्ड मेमोरी आप डेवलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर जो आपने फैसिलिटेशन लेकर आनी होती हैं थ्रू सेरिबेलर पाथवेज एंड थ्रू थैलेमिक पाथवेज एंड थ्रू हाइपोथैलेमिक एंड बेसल गैंग्लिया के रूट्स होते हैं ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको जब फैसिलिटेट किया जाता है टू डेवलप और इवॉल्व वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल एक्टिविटी, ये बेसिकली जो है वो आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के साथ काम करता है. इसकी जो सर्किटरी है वो अगली स्लाइड के ऊपर जो है वो देखते हैं. डिप्रेशन इसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट होता है. व्हेन यू वांट टू फॉरगेट समथिंग और व्हेन you are getting out of the practice of some particular thing and you are not using a particular circuit for a long period of time, so depression जो है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है कि जब आपने एक सर्किट इवॉल्व किया and then in the coming life of yours you have stopped using that particular circuit और वो जो स्किल है वो आपके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो जो वाइप आउट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म डिप्रेशन जो है उसके साथ जो है वो काम करता है.
जी नॉन मिथाइलेटेड जी NMDA इंडिपेंडेंट था तो उसका मिथाइलेटेड पोर्शन होगा एक्टिवेटेड जी गलत है बात सब्जेक्टिव है इंप्रेशन डेवलप किया है ना कॉन्शियस कॉन्शियस में है बेसिकली हाइपोथैलेमिक में है पोर्शन है हाइपोथैलेमस में है उसका जो सर्किट आता है अगर अभी आगे मेंटल आएगा उसको कॉन्शियस का भी all right now these are all the basic areas neuroanatomy के एब्सेंस के अंदर I don't think so that there is any point teaching these particular subjects. जब आपने न्यूरोएनाटमी जिस वक्त हम लोगों ने इस साल जो है वो मामले को स्टार्ट किया था तो डिसीजन ये हुआ था that the anatomy and physiology will go side by side. I am usually fond of teaching CNS in the very first half of the session because उस वक्त लोग फ्रेश होते हैं और एक मुश्किल चीज़ को ज़्यादा आसानी से पढ़ा जा सकता है. With the passage of time जैसे जैसे साल गुजरता है तो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है and then the people are not fresh to retain such heavy kind of knowledge. तो फिर तय ये पाया because के the anatomy was not present कि न्यूरोएनाटमी कैरेक्टराइज आए तो फिर हमने अग्री कर दिया कि हम न्यूरोफिजियोलॉजी बाद में पढ़ाते हैं. It had been clashing with the schedule of my CBS on the other side because के वो 4 महीने का वो सिस्टम उधर चलता है. And I had no idea that how am I going to cover these particular things combined कि मेरा BS में भी लेक्चर होगा BS के अंदर होगा etc. How am I going to do that? Anyways we actually agreed to that. But neurophysiology हो गई और neuroanatomy start की. I have no idea. This was agreed that they have to, unless and until you are aware of the neuroanatomy at certain level, how exactly can I teach you that इनके subjects आपस में कैसे बने? I am totally like this. लेकिन बायोकेमिस्ट्री का तो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट ही नहीं है. ठीक है हाँ बायोकेमिस्ट्री का तो होता ही नहीं. तो बायोकेमिस्ट्री तो मैच ही नहीं हो रही थी किसी के साथ. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को मैच किया गया था. लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये तो खत्म हो गई है न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरोएनाटॉमी स्टार्ट ही नहीं. एनीवे सीरीज के बाद शुरू कर दिया जाए. किसको? सीरीज के बाद कैसे हम एंडो का पढ़ाएंगे? आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? भाई 2 महीने का होता है. नहीं 2 हफ्ते में नहीं पढ़ाया जाता है एंडो. सर आप पढ़ा के जाते हैं ये चीज़ और पर्टिकुलर एरिया के दरमियान में आपको मेमोरी का ट्रांसफर जो है वो कैसे होगा? जस्ट कर लो if you can have a look. I don't know how exactly you आपको ये स्लाइड नजर कैसे आती है और आप कैसे पढ़ते हैं. I have no idea कि पूरा साल कैसे गुजरा. इंटरकॉर्टिकल मेमोरी का ट्रांसफर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पाथवे होता है दैट इज द विजुअल पाथवे. तो जो आप विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं ये विजुअल पाथवे से होती हुई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमिशर्स. एंटीरियर और पोस्टीरियर कमिशर कमिशर को पता है कमिशर क्या करस्पॉन्डिंग एरियाज को जो है कंबाइन करता है. तो दोनों लोग से जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है वो जब आपके कॉर्टेक्स के अंदर जो है पहुँचती है तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो बैंड्स पड़े होते हैं जो इंफॉर्मेशन को क्रॉस ओवर शेयर कर रहे होते हैं. एंड कॉर्पस कैलोसम जो कि मेजर कमिश्नर है फॉर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद लोब्स ऑफ द. तो जो इंटरकॉर्टिकल मेमोरी का आपका ट्रांसफर होता है वो एंटीरियर कमिश्नर से भी होता है पोस्टीरियर कमिश्नर से भी होता है और कॉर्पस कैलोसम से भी होता है. वर्किंग मेमोरी
वो मेमोरी जो कि आप डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल करो, लिखना कैसे हो, बैठना कैसे हो, ड्रेसअप कैसे होगा, लफ्ज़ों का चॉइस क्या होगा, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो, बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी की सारी आपकी वर्किंग मेमोरी के लिए। और वर्किंग मेमोरी ज़ाहिर है कि लिम्बिक सिस्टम का काम है, सो लिम्बिक एरिया वुड बी इन्वॉल्व होगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी मैंने आपसे कहा, हम लोग बार बार गुफ्तगू करते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स की, बिकॉज के दैट इज द एरिया which is evolved in humans and is not very evolved in the lower nervous. This is something which makes you a human and makes you sit within the human environments also. Along with that, आपके जो वर्बल और विजुअल स्पेशल एरियाज होते हैं, विजुअल स्पेशल का मतलब एक तो विजुअल आप देख रहे हैं कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आप सुन रहे हैं, और ऑडिटरी है वो भी एक जगह पे जाकर है वो विजुअल का पार्ट बन जाता है। तो 80% इन्फॉर्मेशन आप विजुअल सिस्टम से लेते हैं जो भी आप ले रहे हैं। उसके बाद आपका ऑडिटरी सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, गस्टेटरी सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम जो कि आप इन्फॉर्मेट कर रहे हैं डॉर्सल कॉलम से लैटरल कॉलम से, ये विजुअल स्पेशल एरियाज अलॉन्ग विद द वर्बल एरिया। दैट मीन्स कि आपने वर्किंग मेमोरी के दौरान अपने रिस्पॉन्सेज कैसे डेवलप करने हैं, बिहेवियर कैसा होगा, लफ्ज़ों का चॉइस क्या होगा, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे ह्यूमनली, नॉन ह्यूमनली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये बेसिकली जो आपका विजुअल स्पेशल सर्किट होता है, ये वहाँ डैमेज होता है जहाँ पर फ्रंटल लोब की एबनॉर्मलिटीज आ रही हों, और फिर जब एबनॉर्मलिटीज आएंगी तो आपकी जो स्पीच है वो अनचेक होगी। वर्निकी से हिपोकैम्पस, ये भी अभी जो है इसका सर्किट पैपेज सर्किट है, जिसको जो है अभी आपको आगे जो है पढ़ाता हूँ। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द कनेक्शंस बिटवीन द ऑडिटरी, विजुअल स्पेशल एंड द लिम्बिक एरिया। लॉन्ग टर्म जो आप मेमोरी, और मेमोरी फिर कौन सी होगी, इम्प्लिसिट भी होगी और एक्सप्लिसिट भी होगी, फैक्ट्स डिपेंडेंट भी होगी, इमोशन डिपेंडेंट भी होगी, प्राइमिंग डिपेंडेंट भी होगी, एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड और रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी डिपेंडेंट भी होगी। जो लॉन्ग टर्म के अंदर आप जो अपनी पर्सनालिटी का आउटलुक डेवलप करते हैं in every aspect and respect of your living, that is basically dependent upon the connectivity between the auditory, visual, spatial and the limbic cortex, that is the prefrontal cortex. There are two important terminologies which Desha do and Johannes do, that is undue familiarity and undue non-familiarity. Undue familiarity, you come across something and you start to feel that you have come across this particular thing, something in your life, and you come across something which you have already come across and you do not feel that you have come across this thing ever in your life before. तो ये जो undue familiarity या जो non familiarity होती है, ये उस वक्त डेवलप होती है जिस वक्त आपका विजुअल स्पेशल सर्किट जो है उसके अंदर पोटेंशिएशन या डिप्रेशन के एलिमेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, अभी हमने जो बात की वो प्रॉपरली जो है वो ना हो, या उस सर्किट के अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, एज ए रिजल्ट ऑफ प्लास्टिसिटी। अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप एक सर्किट को बार बार छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, या अगर आप बहुत हाई लेवल के रिस्पॉन्सेज जो है वो किसी पर्टिकुलर सर्किट में से एकदम से गुजारना शुरू कर देंगे, तो जो सर्ज न्यूरोट्रांसमीटर का आएगा वो पोस्ट सिनेप्टिकली डिप्रेशन या फिर पोटेंशिएशन के प्रोसेस को जो है फैसिलिटेट करेगा। ओवर हियर जो आप स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर भी एक पर्टिकुलर इमेज का बर्स्ट डेवलप करते हैं विद योर मेमोरी सर्किट, दैट एक्चुअली मेक्स यू डेवलप सम वेरी familiar sort of a scenario, or something which was familiar becomes non-familiar. You have और मैं एक ग्रामिक एग्जाम्पल जो है बार देता हूँ बिकॉज दैट इज वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल कि ना आप जो है वो पिछले 3 दिन से जो है वो एनाटमी को गोटे लगाए जा रहे हैं, and the very next day you are about to sit for your state. So the next morning you get up and you actually go through the pages and your mind is totally blank that did I ever come across this particular thing in my life or did I never. Reason behind that कि the circuit was being stimulated, जो आप post synaptic retinization का process है, एक छोटे period के अंदर एक particular sort of information को इतनी exaggeration के साथ जो है वो गुजारा गया है कि जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर पड़ा हुआ था उसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो गया है या फिर उसके अंदर प्लास्टिसिटी डेवलप हो गई है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आपने सर्किट चलाना था बिटवीन विजुअल स्पेशियल एरियाज एंड बिटवीन ऑडिटरी एरियाज एंड बिटवीन लिम्बिक एरियाज जो बेसिकली पैफेज सर्किट है, वो सर्किट जो है वो इंटरप्ट होगा।
दैट इज प्री सिनेप्टिकली कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा, पोस्ट सिनेप्टिकली कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने रिटेन की थी वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट सिनेप्टिक जो हार्ड ड्राइव के लेवल की ओर पहुंची है, ऑल ऑफ अ सडन यू आर टोटली ब्लैंक दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. And I do give the example of when I was sitting for my exam. ENT जो है हमारा बहुत औखा सब्जेक्ट होता था, बहुत औखा इस वजह से होता था बिकॉज के शमीम साहब was the teacher और शमीम साहब was notorious for failing the whole of the session combined together. He was very और हमारा जो सेशन था, हमारे सेशन के अंदर 361 या 62 लोग थे और ENT के अंदर पूरा का पूरा सेशन वायु में फेल था, होल ऑफ द क्लास, पूरी क्लास फेल थी. और हमें पता होता था कि हम जो है ना मेडिसिन सर्जरी तो निकाल जाएंगे, लेकिन अगर हम ENT में फेल हो गए तो इसका मतलब यह है कि हमारी रिटेंशन के चांसेस आर मोर देन 70-80%. तो वी यूज टू पुट सो मच ऑफ एन एफर्ट इन द ENT एंड डिस्पाइट दैट शमीम साहब वाज नेवर सेटिस्फाइड विद द रिस्पांसिबिलिटी वी यूज्ड टू गिव इन द वायु. So he failed majority of the class, and majority of the class को UHS ने 2 या 3 नंबर एडिशनल ग्रेस देकर मेरे को पास किया. और वो वाहिद सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें हमारी पूरी क्लास के साथ स्टाफ लगा था कि इनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया. I had like 100 में से I had 98 in my theory, but वाइवे के अंदर सर ने मुझे 47 पे फेल किया. तो और ये सिर्फ it was not made into a tradition. He used to fail, and trust me, he was an excellent teacher. I have very rarely come across people who teach so excellent. He had such a huge grasp on his subject, and he used to teach so fabulously कि हम लोग समझते थे कि अगर उसने फेल किया है तो उसने बिल्कुल हद पर फेल किया. Because we would not have been up to that particular mark, which we should have been at the end of that. Same is the case with all Nazir Malik Saab. He was like a giant in those particular days. लेकिन जो चीज़ उस आदमी ने हमें पढ़ा दी थी वो चीज़ कभी हमारे अंदर से वाइट आउट नहीं हुई. He was such an excellent teacher. So, anyways, so we used to study ENT a lot. I still remember that when I went for the exam of the, और मेरी memory के अंदर photographs जो हैं वो, I take snapshots and put that in my memory of the book, different kind की memories. So when I sat for the exam of ENT and there was a very small portion of 2 marks, which जो कि डायरेक्ट मैंने गलत किया तभी मेरे 98 थे. तो वो था Ludwig Sangina. Ludwig Sangina मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था. I have gone and I have studied it. लेकिन जब मैं उस स्क्रीनशॉट को जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर बार सर्कुलेट करूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो पेज नंबर 177 है उसका आखिरी जो पोर्शन है 1/3 और 178 का टॉप वाला जो पोर्शन है इस पर Ludwig Sangina लिखा हुआ. बट I don't know what exactly happened कि Ludwig Sangina से पहले का 177 भी था और Ludwig Sangina के बाद का 178 भी था और बीच में बिल्कुल एक ब्लैंक पोर्शन आ रहा हो मेरी मेमोरी के अंदर कि यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं. So that is something which I do remember for later part of life कि जिस वक्त आप सारी रात जो है वो ENT किताब पढ़ते लगाते रहे हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए. And the process of long-term depression has taken place. So it is a possibility कि उसमें patches जो हैं वो आपके ब्लैंक आना जो है वो शुरू हो जाए. So this is how the cramming does not work in the long term. कि अगर आप 3-4 दिन के अंदर जो उसको रट्टे मार के बैठे at the day of the examination you are going 70-80% of the knowledge has already been wiped out through that particular thing. और ये जो डेगा फ्लू और यामिस फ्लू है जो फ्रीक्वेंटली जो है अगर टेम्पोरल लोग के अंदर जहाँ पर आपके विजुअल स्पेशल एरिया स्पेसिफिकली जो वेरिटीज है वो मौजूद होता है, अगर उसके अंदर जो एपिलेप्सी डेवलप हो रही हो तो आपको ये दोनों फीलिंग्स डेजा फ्लू की और यामिस फ्लू की बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो डेवलप होती है. Sir, is it normal deja? At times. This is long-term potentiation of where वो circuit है. If you just have a look at this particular circuit, इसके अंदर जो second सिस्टम आपका 5-hydroxycycline basically serotonin होता है और serotonin is the love hormone. ऊपर नीचे तो पेन परसेप्शन के साथ काम करता है लेकिन ऊपर ब्रेन के अंदर that is the love hormone makes you feel good about something. That means कि कोई भी ऐसी मेमोरी
जो कि आपको प्लेजर देती है या आपके रिवॉर्ड सेंटर को जो एक्टिवेट करती है, वो बेसिकली सेरोटोनिन डिपेंडेंट होती है। और सेरोटोनिन जिस वक्त जो है वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक जो मेमोरी सर्किट के ऊपर जो है एडिशनली काम करता है, तो डीएबी पाथवे आपका और वो सीएमपी पाथवे दोनों कंबाइन टुगेदर होकर अल्टरनेटली जो कैल्शियम के यूज को जो है एनहांस करते हैं पोस्ट सिनेप्टिकली। दैट इज वाई जो पॉजिटिव आपकी जो मेमोरीज होती हैं, जो प्लेजर के साथ मेमोरीज होती हैं, यू बिकम फैसिलिटेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। That in the long term becomes the circuit for the development of addiction to something, that you are continuously stimulating something to achieve a particular sense of well-being or non-well-being. जी, डिप्रेशन में इसी का सेरोटोनिन का लेवल जो है वो आपका जो है वो कम होता है। This is long term potentiation once again, if you just have a look. NLPA dependent or NLPA dependent receptor जो हमने देखा था, NLPA both are dependent on the ग्लूटामेट। ये ग्लूटामिनर्जिक जो है वो रिसेप्टर्स के साथ जो काम करते हैं, और ग्लूटामेट जो है वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक एंड के ऊपर जब भी आपका काम करता है तो कैल्शियम की रिलीज थ्रू डीपोलराइजेशन जो कि सोडियम डिपेंडेंट होता है उसको जो है वो एनहांस कर देता है। वंस अगेन जिस वक्त आप पर्टिकुलर सर्किट को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होंगे, जो प्रोसेस अभी हमने पीछे पढ़े हैं, फैसिलिटेट करके, हैबिचुएट करके, एसोशिएट करके, नॉन एसोशिएटिव लर्निंग के जरिए, प्लानिंग के जरिए, रिफ्लेक्सिव जो है वो मेमोरी या स्किल एक्टिविटी की अपॉइंटमेंट के जरिए उसके अंदर जो है वो सारे के सारे आपके जो प्रोसेस हैं वो काम करते हैं। और ये यूजली आपका जो डिपेंड कर रहा होता है डीएजी सीएमपी लेवल पे कर रहा होता है, किसी किसी जगह पर फॉस्फोकिनेज भी काम करता है और IP3 कैल्शियम भी करता है। बिकॉज के यू आर नॉट अवेयर विद द सर्किटरी ऑफ द ब्रेन और न्यूरल एक्टिविटी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो मैं तो बहुत लंबा दौरा इसके अंदर बताना चाहूँगा। जिस वक्त आप न्यूरल एक्टिविटी पढ़ लें तो ये जो फिजियोलॉजी उसके साथ काम करती है, उस सर्किटरी के साथ, उस सिनेप्टिक असेंबली के साथ, उसको जितना लिखा हुआ है आपके लेवल के लिए ये बहुत है, मोर देन इनफ है। इसको जो है उसको शुरू कर लीजिएगा। अब इट विल साउंड टोटल रिविजन gibberish. This is the package circuit. इसलिए जस्ट हम जितनी भी अपने गुफ्तगू कर रहे थे, हम बेसिकली इसी पर्टिकुलर सर्किट की जो गुफ्तगू कर रहे हैं। And it always starts with a very important sort of a basic idea, that is amygdala. Amygdala के साथ जो है वो स्टार्ट होता है। Amygdala is known as the window of your soul towards the exterior. और विंडो ऑफ द सोल इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि आपकी जो इंटरनलाइज्ड पर्सनालिटी होती है, द ट्रू सेल्फ ऑफ योर्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन amygdala, जिसमें कोई प्रिटेंस नहीं होती। You know that what exactly you are, you know that what your secrets are, you know that with what you do not want the public around you to know about you. So the transparency, the actual you, whatever it is, that is dependent on amygdala. Reason being that this is at the confluence of all the major sensory, nervous and motor systems. As a result of that, any information which you are acquiring from your senses and any information which is being generated within the limbic system ultimately ends up within the amygdala, and this is the final check which is present within your central nervous system to keep on suppressing the responses which you are developing actually in response to the sensory and the limbic information, keeping in mind कि किस environment के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं और क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आखिरी चेक इसने देना होता है आपके CNS के अंदर, वो बेसिकली आपका amygdala प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई जो तमाम इंफॉर्मेशन आपकी लिम्बिक और सेंसरी है और जो मोटर रिस्पॉन्सेज का जो इनपुट है वो अल्टीमेटली amygdala से होकर ही गुजरता है, और ये आपका फाइनल चेक पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। जिस वक्त ये चेक ना हो तो फिर एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो हम आगे देखते हैं। सो amygdala, after receiving the input from all the cortices, that is limbic, sensory and motor, gives the information to the hypothalamus. हम लोगों ने थैलेमस के कनेक्शन के अंदर पढ़ा था कि आपका जो कनेक्शन सर्किट जो है वो मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है, दैट इज एंटीरियर पोर्शन, और एंटीरियर पोर्शन का जो इनपुट आ रहा था वो हाइपोथैलेमस की मेमोरी बॉडी से आ रहा था। दिस वाज मेमोरोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो मेमोरी बॉडी आपकी जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पोर्शन है उसके साथ ही कनेक्शन देता है। जब ट्रैक्ट बनेगा मेमोरोथैलेमिक बनेगा, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थैलेमस के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही थी और वहाँ से जो आउटपुट जा रहा था वो फ्रंटल लोब की तरफ जा रहा था, दैट वाज सिंगुलेट वायरस। व्हेन यू जस्ट हैव अ लुक, ये सिंगुलेट वायरस जो है इसके पास जो है इनपुट जा रहा है। उसके बाद जो आगे आपका जो एसोसिएशन एरियाज पड़े हुए हैं,
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और आपके वीडियो स्पेशल एरियाज, दैट मीन्स कि वो एरियाज जिन्होंने बेसिकली आपका सेंसरी और लिम्बिक इनपुट जो है वो प्रोवाइड करना है, उसको इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है और उससे इन्फॉर्मेशन वापस भी बायलैटरल कनेक्शन जो हैं वो आपके डेवलप होते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सिंगल डायग्राम है इसके अंदर जो है वो इमोशनल इनपुट देता है, यानी कि जो भी मेमोरी आ रही है वो इमोशनली किस कैटेगरी की या किस ग्रेड की मेमोरी है और उसको आपने शॉर्ट आउट जो है किस तरीके से करना है और उसके बाद फिर भी आपको बनाता है हिप्पोकैम्पस के साथ जो है वो कनेक्शन और हिप्पोकैम्पस में जाकर आपकी मेमोरी जो है वो बेसिकली स्टोर होती है और हिप्पोकैम्पस वंस अगेन इंफॉर्मेशन दे देता है आपके अमिगडाला को whether can this is supposed to be expressed explicitly या इसको आपने अपने अंदर जो है वो संभाल कर रखना है, इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में आपने रिस्पॉन्स देना है या रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करना है। सो ये सर्किट अमिगडाला से स्टार्ट होता है और घूम के वापस जो है अमिगडाला के ऊपर आ जाता है, विच इज़ द फाइनल चेक विच इज़ गोइंग टू लेट यू रिजल्ट in the production of a particular response to a particular information, whether sensory or limbic, which was flowing. So if you want to use very abusive sort of a language and you know that the environment is not particularly suitable for that particular thing and you keep that particular urge inside, तो जो एमिगडाला होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि उस अर्ज को सप्रेस करे, यानी कि उसको निगेट कर दे एंड यू शुड नॉट डेवलप दैट पर्टिकुलर अर्ज वंस अगेन समवेयर, and even if you are in an environment where you can use it without your consciousness, यानी कि आप अपने ज़मीन के को इस्तेमाल करते हुए के खिलाफ जाते हुए भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपको सप्रेस रखता है दिस इज़ बैड एंड दिस शुड नॉट बी हैपनिंग इवन व्हेन यू हैव गॉट द अथॉरिटी टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपके साथ किसी ने कोई बुरा किया है इन a particular moment and you have felt very bad about it and you could have you had wanted to evoke a particular sort of a response but you think that it is not worth it, let it go, इसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है। और even when you are in a position of authority and you can respond and you choose that you should not be because that is not up to your level or that this is not something which is appropriate for your stature and you should not descend to that particular level to respond to a thing like this particular thing, तो ये जो आपकी सप्रेशन करता है, जो आपको कॉन्शियस प्रोवाइड करता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर पर्सनालिटी, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, ये बेसिकली आपका अमिगडाला जो है प्रोवाइड करता है। अगर जो है आपका जो फ्रंटल लोब है वो इवॉल्व नहीं हुआ और आप ये बेसिकली कॉन्शियस डेवलप नहीं कर सकते दैट वेदर दिस इज appropriate in the long term according to your personality, according to your grooming, according to your family stature, etc. etc. तो अमिगडाला जो है वो आखिरी चेक जो है वो किसी हद तक जरूर प्रोवाइड करेगा कि जिस वक्त एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप थ्रेटेंड फील करते हैं कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, वहाँ पर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर आएंगे, किसी ऐसे सर्कल के अंदर आएंगे जहाँ पर आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है, तो यू विल डाइवर्ज द सिकेस्ट ऑफ द responses which you were suppressing inside. So because they get mixed with rage, they get mixed with all the suppressed energy of yours which you have been, so all of a sudden when you take out that particular chunk, there is a deluge of abusive activity which is happening over there. You are going to backbite, you are going to bitch about people, you are going to be interrogatory about the people, you are going to brew the rumors about the people, you are going to disseminate bad info about the people, you are going to carry out the campaigns against the people at a particular point where you think that you are safe. But the moment you are in the presence of someone where you think that a response will come, you will go docile. But the amygdala would not be able to suppress that particular emotion as it would have in evolved for a normal individual. So अमिगडाला जो है वो आपका आखिरी चेक जो है प्रोवाइड करता है और जिस वक्त जो है वो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया का जो है वो डैमेज हो जाता है, तो फिर 3 पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट आप जो है वो सिंड्रोम डेवलप करते हैं जिसको क्लूवर बुक्सी सिंड्रोम और क्लूवर बुक्सी सिंड्रोम 3 जो है वो इसके अंदर होते हैं। हाइपर एक्साइटेड, you cannot sit properly for a longer period of time at a particular place. You are very irritable. आपसे बैठा नहीं, so irritable and so volatile that whole of your personality gives the aura of that volatility. Hyperphagia,
It is not actually hyperphagia, it is increased curiosity about the things which are in your environment. So whatever is in your hand, you try to put that inside your mouth. It is basically कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, you try to chew that particular thing, whether it is appropriate or whether this is not appropriate. So hyperphagia जो है अदर जो है दूसरा फीचर होता है. और तीसरा फीचर होता है hypersexuality. जो आपका sexual urge है, whether it is verbal, whether this is intellectual, and usually the people who are having amygdaloid damage, उनके अंदर verbal orgasms होते हैं, that you actually feel good using the language which is full of sexual references, and that is indicative of the hidden aspect of that hypersexuality which you have been telling, that you actually desire for very sick sort of sexual behaviors. For example, the sort of sexual behaviors which are very abuse dependent, that you want to actually inflict pain while you are having pleasure out of someone. You want to actually abuse someone physically, and then you actually want to leave the person in the lurch in those particular moments. And you are going to be derogatory about that particular person. So ये जो usually प्लूवर बोसी वाले लोग होते हैं, उनकी जो language होती है, वो basically verbal orgasm ले रहे होते हैं. That their language is so full of sexual abusive terminologies, which is always indicating that what exactly are they wanting in the background. These are the ones which use, who have got the ideas about incest. These are the people who have got the idea of physical proximity with very inappropriate age groups, either the pedophiles or the necrophiles. तो ये जो आपके इनअप्रोप्रिएट जो सेक्सुअल स्लैंग आप इस्तेमाल करते हैं, और वो इस कदर शिद्दत का जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो बार बार रेपिटेटिवली, ये इंडिकेटिव है कि बैकग्राउंड के अंदर एक ऐसा जो है वो सेक्सुअल थॉट प्रोसेस चल रहा है कॉन्टिन्यूस ग्राउंड्स के ऊपर, जो आप सेटिस्फाइड है वो इन एक्चुअल नहीं कर पा रहे, और आप उसको वर्बली जो है वो परफॉर्म करने के बाद उसका वो ऑर्गेज़्म ले रहे हैं. एंड द मोमेंट दीज पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, they actually carry out that particular behavior. That means कि अगर उनको pedophile होने का मौका मिलेगा तो बहुत आसानी से pedophile हो जाएंगे. उनको जो है वो अगर opportunistic rape का मौका मिलेगा, regardless of the gender, even gender doesn't matter in these particular people. Regardless of the gender, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप rapist हो जाएंगे. आप manipulative rape करेंगे, that you actually take advantage of the emotional lows of the people, try to get closer to those people for the support, and then actually get physically abusive over them. And these are the people, or once you have done the abuse, so then you actually leave the person in the lurch and try to find someone else. और उसके बाद apart from that particular thing, जो जिस वक्त आप जो है वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में किसी के साथ हैं, someone has been willing, तो you are physically abusive. सिगरेट से जलाते हैं, कट्स लगाते हैं, etc. etc. Because you are so sadistic behaviors that you are actually deriving the pleasure out of someone's pain, someone who was actually giving you. तो जो मामला है वो सबसे पहले वर्बल ऑर्गेज़म से स्टार्ट होता है. वर्बल ऑर्गेज़म जहाँ भी आ रहा हो, अमेगडाला जो है वो आपका काम नहीं कर रहा, बड़ा क्लासिकल फीचर है आपका Kluwer Butsi ka. The people have got hidden sexual desires which are inappropriate morally, ethically, medically, emotionally, etc., etc., etc. And they're actually giving the hint that they want this particular thing again and again and again and again. Dangerous people. Ji. Sorry? दोबारा पढ़ें. Sadist. Sadomasochist, that is what I am saying. They actually get sadomasochistic. Ultimately जो abuse है वो किसी न किसी sadism की फॉर्म के अंदर या masochism की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट तो होगा. ये verbal abuse से ही मामला जो है वो स्टार्ट होता है. यानी कि मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि this is verbal orgasm. You feel good because you had wanted something, you are not able to have that particular thing, and you are actually having a very vivid fantasy whenever you are voicing that particular terminology, whenever you are relating that particular thing while you are sitting in a company you think is appropriate. So
these people are basically having verbal orgasms. और ये जो verbal orgasm होता है ये पहला इंडिकेटर होता है that you people are having the last आखिरी जो चेक है एमिगडाला ने कहीं पर रखा हुआ है, and the moment ये एमिगडाला जो है वो आपका एग्जॉस्ट होता है you are going to actually indulge into all that particular sort of activity which is inappropriate. जी. What about the people who gloat over other people's misery? Sorry. What about the people who gloat over other people's misery? वो gloat Yeah. वो वही तो होता है सैडिस्टो-मैसोचिस्टिक बिहेवियर ही है. Gloating is different. No, वो sadism का पार्ट होता है. That you are actually feeling good about something about which you should be feeling sad about. It's not sexual. ज़रूरी नहीं, ठीक है, वो नॉन सेक्शुअल भी हो सकता है. मैं तो वर्बल अब्यूज़ तो मैंने आपसे कहा एक होता है, पर दूसरी साइड के ऊपर आपका जो इमोशनल एलिमेंट है वो तो वही पैथ पे तो वही चल रहा है. यू आर गेटिंग रिवॉर्ड बाय समथिंग, प्लेजर बाय समथिंग विच इज ईदर फिजिकल और नॉन फिजिकल, दैट इज बेसिकली सैडिज्म. और ये पीपल जो लोग होते हैं यूजुअली सैडिस्ट्स होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इवॉल्व करते हैं, उनको डिसैमिनेट करते हैं, फिर उस थ्योरी पे डिपेंडेंट जो है वो कल्ट बनाते हैं, और उनके जो कल्ट होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं. यानी कि whatever is being said that is absolutely right in its finality. इसके अंदर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ठीक है. और ऐसे लोगों के अंदर वो मेमोरी सर्किट के अंदर आप डेवलप करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यानी कि फैक्ट्स और इमोशंस को डिसाइफर करने की कैपेसिटी ही नहीं होती कि आप देखें कि क्या फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर दूसरा तीसरा कोई रेफरेंस चौथा आपको मिल सकता है, या ये मामला यहाँ पर जो है वाकर आपका खत्म हो जाता है. तो ये जो यूजली लोग हैं उनके इंटरप्रेटिव कैपेसिटीज नहीं होती, डल लोग, और कल्ट पर जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं. दैट मीन्स के द मोर द कल्ट इज, सर ये नॉट करें 5 मिनट जो कल्ट जो जितना जो है वो आपका जो स्ट्रॉन्ग जो है वो कल्ट होगा, उतना ही जो है वो आपका जो बिहेवियर है वो सपोर्ट होता चला जाता है. यानी कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जहाँ से निकलेंगे तो आप आगे ला देंगे, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, बिकॉज के यू हैव गॉट अ कल्ट हु इज गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. And I'll give a very classical example of our very dear ex-Prime Minister, Mr. Khan. कल्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है. अगर आप लैंग्वेज को देखें और अगर आप फैक्ट्स को देखें, तो जो फैक्ट्स वो प्रेजेंट करते हैं रिगार्डलेस के वेदर कि आप उसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, जो पब्लिक उनके सामने खड़ी हुई है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द पर्सन हु इज सेइंग सच फाउल लैंग्वेज or a language which is narcissistically foul, that you consider yourself better than all the people who are standing in front of you, and then you are actually deriving their energy to boast your own stature and actually leaving those particular people in the lurch. तो ये जो कल्ट डिपेंडेंट लोग होते हैं, जो कल्ट पर सर्वाइव करते हैं और इस किस्म की लैंग्वेज और इस किस्म की जो फैक्चुअल एरर्स हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, डेंजरस पीपल, नॉट गुड पीपल. कोई ट्रीटमेंट नहीं, देयर इज नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट, ठीक है. एट मोस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप उसको जो है वो बहुत हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन देकर या सेरोटोनिन डेप्रिवेशन देकर, डिपेंडिंग अपॉन द केस, नम कर देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट ये तो ऊपर से जो है ना अल्लाह ने काम पूरा किया. हाइपरफेजिया वही पेट है, वही पेट है. नहीं वो तो इवॉल्विंग पेट है. ऑलराइट जी, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं इसको बताना चाहता हूँ. उसके बाद आई विल फिनिश दिस पर्टिकुलर लेक्चर मे बी कि दिस इज सपोज टू बी द लास्ट लेक्चर, बिकॉज कि मेरे ख्याल से मैंने मेजर चीज़ें सारी जो इम्पोर्टेंट थी और जो शायद से बात नहीं करा सकता था मैंने उसको लेवल करा दिया. विल यू प्लीज सिट डाउन. या बाहर चले जाए. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नहीं पता कि पहले कराई गई या नहीं कराई गई, लेकिन बिकॉज के सेंसरी सिस्टम का पार्ट है और आपके एग्जाम के अंदर बार बार आती हैं, तो आई विल लाइक टू गो ऑन दैट. वन इज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम एंड अदर इज थैलेमिक पेन. फैंटम अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब गोस्ट होता है, और फैंटम लिम्ब का मतलब यह है कि समथिंग which is a ghost but is yet able to produce its particular aura. तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो पहली दफ़ा जो है वो डायग्नोज हुआ था कि जिस वक्त जो है वो सोल्जर्स के लिम्स कट जाते थे और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर होते थे, तो वो डॉक्टर्स को बताते थे कि जी हमारा जो लिम्ब जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कि कट चुका है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हमें उसके
So this is supposed to be उस वक्त ये terminology जो है वो डिवाइड हुई 50s 40s लेट 40s के अंदर के जीना फैंटम लिम्ब सिंड्रोम जो है कोई चीज़ होती है. Over the period of time 70s 80s तक people kept on finding the reason for this कि इसकी वजह क्या है. और 90s के अंदर आकर जो है फिर पहले क्लोज जो है वो मिलना शुरू हुए. 2000s के अंदर आकर जो है सर्किट भी जो है वो इवॉल्व हुई है. तो द रीज़न इज़ दैट इफ़ यू जस्ट हैव सीन कि अगर आप किसी एरिया को जो है अबैंडन कर दें और अबैंडन करने के बाद जो नेचर का अपना इनपुट होता है जो आपका जो घास है और जो खुद पौधे हैं वो अल्टरनेटली जो उसको इंक्रोच कर लेते हैं एंड देन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग स्टार्ट्स टू ग्राउंड. तो दे केम टू नो कि जिस वक्त आपका जो लिम्ब है उसको काट दिया है आपने, लिम्ब तो कट गया है लेकिन जिस एरिया है उसके रिप्रेजेंटेशन ऊपर ब्रेन के अंदर देने की वो एरिया आपका इंटैक्ट पड़ा हुआ है बिकॉज के उसके अंदर आपका इनपुट जाना बंद हो गया एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन इट हैज़ बिकम अ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो जो साथ के एरियाज आपके पड़े हुए थे उन्होंने बिकॉज कि उसमें एक्टिविटी अपनी नहीं हो रही उन्होंने उसके अंदर सिनाप्सिस करने शुरू कर दिए, उसको इंक्रोच कर दिया. और जब उस एरिया को इंक्रोच कर दिया गया है साथ वाले फॉर एग्जाम्पल नी के एरिया में इंक्रोच कर दिया, थाई के एरिया में इंक्रोच कर दिया, तो जिस वक्त आप इस पर्टिकुलर चीज़ को हिट करते हैं तो वो सिंपल सिर्फ थाई के एरिया में नहीं जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनाप्स वो उस एरिया में भी चला जाता है विच वॉज प्रिंसिपली सपोज टू रिप्रेजेंट समथिंग विच इज नॉट नाउ ओवर देयर. As a result of that particular thing, you feel the pain in that particular area or feel the sensation in that particular area which is not there. And as a result of that, because that is not there and still it is presenting to it was supposed to be a phantom, and that is why it is known as phantom limb syndrome. लोगों दो तीन आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ. और अगला है दैट इज थैलेमिक पेन. इसको डेविलन-रॉजी सिंड्रोम भी बोलते हैं. इसका जो दूसरा नाम है दैट इज डेविलन-रॉजी सिंड्रोम. थैलेमिक पेन थैलेमिक पेन जो है उस वक्त डेवलप होता है जिस वक्त आपका वेंट्रोपोस्टेरोलैटरल और पोस्टेरोमीडियल जहाँ पर डॉर्सल और लैटरल कॉलम हो रहा होता है इस एरिया के अंदर जो है वो अगर आपका हाइपॉक्सिक डैमेज हो जाए दैट मीन कि जो ब्लड सप्लाई आपकी वेसल लेकर जा रही थी वो ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी कट जाए और कटने के बाद जो है वो आपका जो एरिया है उसका स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए. और हम लोगों ने ये बात लास्ट ईयर भी जब आपका जो है वो मसल पढ़ रहे थे कार्डियक मसल उसमें हमने ये बात बार बार बताई थी कि जिस वक्त आपका मसल जो है वो स्ट्रक्चरल बुनियादों पर डैमेज हो जाता है तो जो आपके वोल्टेज रिलेटेड चैनल्स पड़े हुए होते हैं उसकी मेम्ब्रेन के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे लीकीनेस की तरफ एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्टोपिक फोकस के तौर पर जो है वो जनरेट होता है. ये एपिलेप्सी की जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है बिकॉज के वो पेस मेकर के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देता है. तो जिस वक्त आपका हाइपॉक्सिक डैमेज हुआ उसने स्ट्रक्चर को तोड़ा है और स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके चैनल्स पड़े हुए थे नर्व के अंदर वो आपके बेसिकली जैसे आपके दरवाजे का कब्जा तोड़ दिया हो एंड दे हैव बिकम लूज ओवर देयर. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एपिसोडिकली उनके अंदर जो है वो सोडियम फ्लो करता रहता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो स्टिमुलेट होते रहते हैं और स्टिमुलेट होने के बाद आपका जो एरिया था बिकॉज के थैलेमस एक पूरी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो आपका पूरे हाफ के ऊपर बड़ी सीयरिंग काइंड ऑफ जो पेन की वेव्स हैं वो चलती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीपल कंप्लेन दैट हाफ ऑफ देयर पोर्शन इज ईदर बर्निंग और एल्स दे जो क्लासिकली जो हमें रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं. आई हैव जस्ट सीन द डेरिवेटिव वंस इन माय लाइफ. जो क्लासिकल उनका जो टर्मिनोलॉजी होती है दैट इट्स मीन दैट हाफ ऑफ माय बॉडी इज हेलफायर. इस कदर जो है वो शिद्दत का जो है वो पेन होता है द पीपल कंसिडर दैट दे आर बीइंग टॉर्चर्ड इनसाइड द हेड. तो ये डेरिवेटिव जो है वो यूजुअली जो है वो हाइपोथैलेमिक जो है वो सॉरी ब्लड सप्लाई है उसकी करप्शन के साथ जो है वो आता है और जो थ्रोम्बन वाले फिनोमेना है अगर नीचे से चीज़ गई है और उसके ऊपर जाकर आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है हाइपॉक्सिक डैमेज हुआ है तो जैसे ही थैलेमस आपका रप्चर हुआ है उसके अंदर जो है वो ये ऑटो रेगुलेशन जो रिदमिसिटी है ऑटोमेटिसिटी डेवलप हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाफ ऑफ योर बॉडी इज हैविंग. तो जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसकी एबलेशन होती है उस एरिया को जो है उसके साथ बाकी सेंसरी लॉस भी आता है लेकिन बहरहाल एट दैट पर्टिकुलर लेवल जो पेन है वो जो है सर्वाइवल हो जाता है. दैट इज नोन एज थैलेमिक पेन एंड डेरिवेटिव syndrome. So with this I have gone through the major areas of the CNS which you should be knowing while you sit for your exam. Maybe once you have gone acquainted to the liver anatomy and by that particular time you have not to get with the examination department. So we might have the revision of some very important things on the physiological grounds in a week or in a period of 10 days. But for now I think that I am
I'll go and I'll see that कोई और important चीज़ रह गई हो तो maybe we're going to take it on Monday. If not, then this is goodbye from my side. Wish you the best of luck for your exam. इसके अंदर सर जो थैलेमस वाला सर आपने बताया ये सर डीजनरेशन की वजह से होता है या रीजनरेशन की वजह से? बिकॉज सर मैंने जहाँ पढ़ा था उन्होंने कहा था कि जब डैमेज हो जाता है ना तो जब न्यू न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं तो वो इतना वो बाद में जब इम्प्रोव करना शुरू करें